नमस्कार। स्पेशल इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, अमेरिका में चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया। ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और भारी मतों से चुने हैं। लेकिन ये बड़ी जितनी घटना है, उससे भी बड़ी घटना हो गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कुछ ऐसे निर्णय लेने जा रहे हैं जिसके बाद पूरी दुनिया में उन लोगों में अफरा तफरी मचेगी जिन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में महापाप किया। खासतौर से महामारी के दौरान जो उन्होंने पाप किया है, उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त हथौड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से चला दिया है। खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का मन बना लिया है। रॉबर्ट एफ कैनेडी कौन है, ये आप सबको मालूम है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं और रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर के बेटे हैं। मशहूर अटॉर्नी रहे हैं, डेमोक्रेट के नेता थे। इलेक्शन में वो भी कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट, लेकिन उन्होंने विड्रॉ किया और बाद में डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन करने का मन बनाया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि रॉबर्ट एफ कैनेडी ने महामारी के दौरान कितनी बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने किस प्रकार से फार्मा के फ्रॉड को एक्सपोज किया। एंथनी फॉची, फार्मा और पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी के बीच में कितना बड़ा घालमेल है, इस सब के बारे में रॉबर्ट एफ कैनेडी ने एक्सपोज किया था, बहुत बड़ा। आज ये विशेष ब्रॉडकास्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं। बहुत लंबे समय के बाद अमेरिका और दुनिया के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर मैकॉलर दोबारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से। उनके साथ यूएचओ के चेयरमैन डॉक्टर अमिताभ बनर्जी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा और डॉक्टर प्रोफेसर भास्करन रमन, आईआईटी मुंबई के फैकल्टी। So I'm just going across to Dr. Peter McCullough. Thank you very much, Doctor, for being with us once again. It's been a year, I think, that we are joining once again. How is the mood after the election in US, Dr. Peter? The country is elated with a decisive victory of Donald Trump and Vice President J.D. Vance. As you reported, Trump is really now a team of Trump, Vance, Robert F. Kennedy, Tulsi Gabbard, Elon Musk. Even podcaster Joe Rogan gave his support at the last hour. So much to do now in about 70 days with a new administration. But you have left one name, that is Dr. Peter McCullough. Your contribution cannot be undermined. So what is your role going to be? I can't, influence the deliberations that will go on in choosing various roles and health advisors. I can tell you that Team Trump doesn't have a qualified practicing physician or any scientists at this point in time. They'll have to be assembled. Remember, Robert F. Kennedy, even with all his advocacy for health, he's not a practicing doctor or a qualified scientist, and we'll need to be working through these issues. The first issue up is to remove the COVID-19 vaccines from the market. So what is your point of view? What responsibility Dr. Robert F. Kennedy is going to get from a Trump administration? It's possible he may be named a cabinet chair, Secretary of Health and Human Services, but that would require Senate confirmation. But if that's the case, then he would have authority over the U.S. CDC, NIH, and FDA, as well as Public Health Service. I have seen few reports, Dr. Peter, that and all the reports have been thoroughly criticizing Robert F. Kennedy, that he has been very critical about so many things, and where he is not the domain expert. As he said that he will remove fluoride from the water, and he will do something against the pharma premises who almost exploited the healthcare in their benefit. So how nowadays all the pharma premises and the research journal, they have written something against Robert F. Kennedy. So what is your opinion? How you are looking at Robert F. Kennedy in this almost atmosphere?
Well, Robert F. Kennedy will be a disruptive force. I think the only executive order we need on day one is to remove the COVID-19 vaccines from the market. That'll have to come from President Trump. Now, everything else needs, these issues. Let's say trans fats in seed oil and vegetable oils, fluoride in the water, glyphosates as herbicides. All of these issues need the standard process of identifying the stakeholders, building consensus, and then making a policy decision. There's some standard processes there. Kennedy hopefully will assemble a team around him to guide him through these processes. They can happen quickly, but they do need to follow normal order. We can't have government by tweet, and I think people should be cautious in those types of endeavors. Dr. Peter, it seems that you are also a little bit critical and criticizing Robert F. Kennedy. So do you think that he is a cynical man? Well, criticism is good. And we've all received criticism. Everybody on this program today has received criticism. Criticism is good. And I'm someone who's very experienced with the US FDA, very experienced as a practicing physician. I've had large numbers of people report to me. So I know what I'm talking about. And so when it comes down to, let's say, trans fats or changing things in the food supply or the water supply, there is a group of stakeholders that need to be brought in. It can't be done by Robert F. Kennedy alone. Though we have very little time, in fact, you have said that you have only 20 minutes for us. So I'm just going to ask you very, very pertinent question. What would be the fate of WHO? WHO. Why? Because Donald Trump, Robert F. Kennedy, Elon Musk, Joe Rogan, whosoever you name, everybody was critical about WHO. So what is going to be the fate of WHO now? Trump has said on the campaign trail that he would pull out of the WHO. He would defund it from a U.S. perspective. If that's the case, we should quickly see the WHO change its course, become far more conciliatory, far more malleable in terms of working with the United States and hopefully India in terms of global public health. So we'll have to see. That'll be something I'm sure that'll come up in the first year of the administration. Yes, now I am opening the debate from WHO perspective. Chairman Dr. Amitabh Banerjee will start asking you question, then one by one, Dr. Arvind Kushwaha and Professor Bhaskar Raman will ask you question. Dr. Banerjee, please go ahead. Thank you, Ashutosh. Dr. Peter, I have but one concern. If the United States stops supporting WHO, won't the vacuum created will give more pharma lobbying, pharma supporting the WHO? Won't it increase the influence of pharma? Well, that's actually a very perceptive analysis. If the U.S. does pull out, it could upset this power structure at the WHO. Remember, the power structure is really dominated by the Chinese, the Gates Foundation, not so much by the United States. An alternative strategy is not to defund the WHO or pull out or simply have much stronger representation. We had representation from UNAID, which is a liaison, as well as the Department of State. Maybe we should reorient it. I have a feeling that the Gates Foundation has such a strong control over the WHO that really the only strategy is for the United States to pull out and have them recalibrate. Or any more question you want to ask, Dr. Banerjee? You said about the health advisors in the White House. You would be depending on health advisors. I remember during the first tenure of President Trump, Professor Scott Atlas, Jay Bhattacharya, I think even you gave some presentation. So do you see some of these people influencing the policy, public health policy? It's very possible. Remember, Stanford professor Scott Atlas was in the White House for 9 months with Trump. And I know Scott personally. He got along with Trump well.
Jay Bhattacharya and Martin Kulldorff would be brought in. But none of those doctors actually see patients. They never saw a COVID patient or made life-saving decisions. So I'm hoping a new set of advisors of very credible doctors who see and examine patients, who are publishing, can have an influence. Because if there's another pandemic, we need to have people in charge who know what to do when the country falls into a health emergency. Dr. Kushwaha, do you think that... Okay. Yeah, please go ahead, sir. I think Dr. Pierre Kory also is an active physician, and he has got a year of the White House. Yeah, well, Pierre Kory, myself, many others have testified in the Senate and Congress, but we haven't gotten into the inner circle with Trump or in the White House. Now, we heard in the last 48 hours that Susie Wiles will be chief of staff, and she has a reputation for really, keeping people away from Trump, trying to, restore order out of chaos. And so we'll see how things work out. But I would make a strong push for the most credible doctors, the greatest publication records, those who are seeing and examining patients, who have set themselves up as role models for the country. They should be in the inner circle. So before going to Dr. Kushwaha, from my side. Thank you. Before going to Dr. Kushwaha, I'm just asking you one question. Otherwise, I will forget the question. Anthony Fauci, when I saw the congressional hearing of Anthony Fauci, and in that hearing, he expressed that I am getting so many threats call, and I am under threat. My family is under threat. So what he is thinking right now? Is he afraid? Is he scared? He must be scared to death. We have books written by Robert F. Kennedy, as well as Senator Rand Paul and others, that have laid out the fact pattern that Anthony Fauci should be prosecuted. That means assignment of a special prosecutor. Fauci, Peter Daszak, Ralph Barrick, David Morins, Francis Collins, they should all be targets, not just subjects, but targets in a special investigation by a special prosecutor with criminal charges. Now, the two charges that many believe Fauci should be, assigned, and that is fraud, that he lied to the country, and then mass negligent homicide. So are we expecting that there will be a prosecution trial in coming future? Yeah, if I'm involved in any of the direction, that would be my push, that America needs justice, and a special prosecutor is our standard method of the government taking on somebody within a government role at the time, and those are the individuals I mentioned. Okay, Dr. Kushwaha, please. Dr. Peter, my request is that before we go and amend the present system, I think it's more important that we hold people accountable for whatever wrongs have been committed during the pandemic. I think unless that is done, there is no point moving forward. So that the thing in future, worst comes pandemic treaty and for us probably and the evil intent behind it, so it could not be finalized. So we need to hold those people accountable who have missed public and the government in the COVID pandemic. Unless they are taken to task, it will never get rectified. Of course, changing the system should remain the same. There is no harm, but we should need checks and balances, and we need to clean up the system. So of conflicts of interest. So we need to put checks and balances from all the countries, from individual countries as well. What they do is they control the governments through their direct. What we need is the check
and hold people accountable to WHO, and if need be, restructure it and probably make it more democratic, where people are, these are all unelected representatives. When the UN didn't work, they worked behind the curtain through the WHO. Well, let me just respond to that. Certainly within the United States, what you're suggesting is a wider probe, not only special prosecution of U.S. government officials, but also the pharmaceutical companies, and then the non-governmental organizations that played a role. And, so that is a wide probe. Potentially the International Criminal Court would be the type of venue for that. But you're right. Without these checks and balances, for instance, we should never have a foundation like the Gates Foundation promoting vaccines be able to invest in vaccine companies. I mean, that's, it's straightforward. We should never have a health commissioner for India, United States, or anyone else, take a job with the pharmaceutical company as soon as they leave office. We need restrictive covenants. I agree with you completely, Dr. Kushwaha, that we should have checks and balances. Yes, I think it's very pertinent that if anybody was accountable, they must get the punishment. Unless they are not getting punishment, I think that it is going to be a big test of Donald Trump also, that how he will react to all those fellow who did wrong. Now, Professor Bhaskaran, please. Hello, Dr. McCullough. So I saw a recent interview of RFK Jr. where he mentioned something which I liked. He said that he's not looking to ban any vaccine, but to hold them accountable in terms of a randomized controlled trial. So in some sense, I would like the same for the COVID vaccine as well, because if they just pulled off the market now, like it happened in Idaho, they will be considered a martyr rather than held accountable. I think that the truth will emerge only if we hold them accountable. We hold the product itself accountable in terms of a randomized controlled trial, and the various authorities who push this accountable in terms of scientific discussions, and all of these so-called intelligentsia, all the colleges have all mandated this on young students. So they should be held accountable for what they have done without any evidence of risk-benefit analysis. So my feeling is that, so I kind of liked what RFK said in that regard, that his goal is not to eliminate what people, if somebody wants to take it, go ahead, but the decisions should be based on informed consent. Well, you brought up some new dimensions to this discussion. The first is Robert F. Kennedy did say that we don't intend to take away people's vaccines. And I think he was referring to the routine childhood schedule. But you're right. Holding accountable for large prospective, long-term randomized trials. The vaccine industry has plenty of money to do these trials. Product liability. That is rescinding the 1986 Vaccine Injury Compensation Act, and then also revising the CARES Act and the PrEP Act in order to have the vaccine companies have full liability for their products, I think is very important. The last point you said is informed consent, that people ought to be fairly informed of what could happen. You know, the COVID-19 vaccine is on the consent form. It doesn't list death. It doesn't list, let's say, fatal myocarditis, which is well described in the literature that can happen with COVID-19 vaccines. So we need full informed consent. The last piece to this, and this will have to be my last comment, is we must abolish all mandates of all types. No one can be mandated to take any vaccine at any level for school or for work or government positions. No mandated vaccines or medical products. We must have full medical freedom. I'm Dr. Peter McCullough. Thank you so much for having me on the program.
Last question before leaving. I'm asking you before leaving the show. This is the last question. What now? Is there any sense of change of mood in left-leaning media who were very critical to Donald Trump, and people were telling that it is a fight between Donald Trump and the media. So what is the mood now? Are they changing their mood? Yeah, the left wing is doing a deep analysis of what went wrong, but they do understand that Trump won the popular vote and the electoral college. So this is a strong, decisive win. He's a populist president, and the mood is lifted in the country. The stock market is going up. People in the financial services sector, so many other areas are enthusiastic. And it's fine to be critical. It's fine to have broad discussion. We want to have free speech, no censorship, complete medical freedom, and we want prosperity for the United States and for India and for the entire world. Again, I'm going to sign off. Thank you. Thank you very much, Dr. Peter. I think you may leave. Thanks for being with us. Thank you very much. Thank you very much. You may leave. अब आखिरी में कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. अभी उन्होंने कहा कि जो स्विंग स्टेट्स थे वहां भी बहुत समर्थन मिला और थंपिंग मेजॉरिटी ट्रंप को मिली है, और हर तरह के सेक्टर्स में उनको बढ़िया वोट मिला है. तो ये क्या साबित करता है साहब? अभी जो लास्ट जो सर्वे था उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट इशू था वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूएस में, जिसको एलन मस्क ने ट्वीट भी किया था. तो इसका फॉल आउट होगा रॉबर्ट एफ कैनेडी को अगर मिलता है, क्योंकि रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कभी ये नहीं कहा, आपने ठीक कहा प्रोफेसर भास्करन, की वैक्सीन को बैन कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा. उनको मिस रिप्रेजेंट करके, मिसकोट करके जो एजेंडाधारी मीडिया थी वो बढ़ा रहा था, और उसको कहा जा रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं. अभी भी विकिपीडिया के बारे में हम लोगों ने रिसर्च किया कि विकिपीडिया को कौन फंड कर रहा है. बहुत बड़ी मात्रा में विकिपीडिया को सोरोस फंड कर रहा है, और विकिपीडिया में आज भी सर्च करेंगे, गूगल सर्च में जाएंगे तो सबसे पहले उनको मिस इन्फॉर्मेशनिस्ट कहा जाता है, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेडर कहा जाता है. तो ये जो अब क्या लगता है कि इसमें स्विंग होगा, चेंज होगा? बेशक होना चाहिए. विकिपीडिया का जो फाउंडर है वो उसका भी स्टेटमेंट आ चुका है कि वो खुद अभी विकिपीडिया में भरोसा नहीं रखता है, जिन्होंने विकिपीडिया को फाउंड किया था. तो मैं जैसे कहा था कि सुबह कहा था कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो पूरे कंट्रोल कर रहे थे, और अभी जो इलेक्शन रिजल्ट से पता चलता है कि आम जनता को पता चल गया है, इसीलिए ये इतने मेजोरिटी वोट से आए हैं. तो ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक निशानी है, और हमको अफसोस है कि हमारे देश में कोई पार्टी ने ऐसे कोई नहीं अपने एजेंडा में डाले हैं कि इसका जांच होना चाहिए या इसका रैंडम ट्रायल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए. तो ये अच्छा है. अमेरिका से ही अगर हमको थोड़ा बहुत रोल मॉडल बन जाए वो डेमोक्रेसी, तो हो सकता है हमारे यहाँ भी ऐसे लोगों को जागरूकता हो, एम्पावरमेंट हो, और फिर ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्शन लेंगे. आप एक क्वेश्चन लेंगे. कुशवाहा जी, आपको लगता है कि भारत में कुछ ऐसा हो पाएगा? कम से कम वहां तो हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बड़ा मुद्दा बना, लेकिन यहाँ तो हर चीज को दबा दिया गया, सब कुछ को बंद कर दिया गया. लगता है कि नियर फोर, और सबसे बड़ी बात है कि आपके लवली प्राइम मिनिस्टर हैं, डार्लिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एज में ये सब कुछ हो रहा है. डॉक्टर कुशवाहा, आज उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम. हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक इंडिया इसमें कोई ये सिर्फ एक ऑपोजिशन फैलाया हुआ एक भ्रम है. लगातार पिछले 4 साल से बोला है, आप इन्होंने भी बोला हमारी गवर्नमेंट सर्विस, और आपकी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है. प्रोफेसर भास्कर, क्लोज करेंगे. प्रोफेसर भास्कर, लास्ट क्वेश्चन. कुछ आपको चेंजेस दिखेगा आने वाले दिनों में यूएस इलेक्शन का इंडिया पे? That is hard to tell. I don't know.
of course, see I think some of the promises which RFK Jr. has made in terms of the health agenda will have repercussions not only in India but throughout the world, because US, all said and done, is considered the leader in various technology, uh, uh, medical technology as well. So and definitely, भारत और यूएस के बीच में काफी गहरा कनेक्शन है. मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियंस living, first Indians born in India who are now American citizens living there, and there's a lot of people in India who have family, friends, deep connections there. A lot of people such as myself who have received their education in US. So in that sense, there's a lot of connection between US and India, and what happens in US has repercussions throughout the world. And in this sense, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अकाउंटेबिलिटी की बात हुई है वो यूएस में शुरू हो और बाकी देशों में भी कंटिन्यू हो. तो डॉक्टर भास्कर ने, प्रोफेसर कुशवाहा, डॉक्टर कुशवाहा ये कहा कि भारत में उसका रिपरकशन जरूर होगा, बीइंग द लीडर ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका, एंड इट इज, वो किसी ने कहा नहीं है, वो एक स्वयंभू लीडर बन गया है, क्योंकि वो हर चीज में पावरफुल है, और खासतौर से टेक्नोलॉजी में और मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी. मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी में तो जरूर पावरफुल है, सब कुछ वो कर रहा है, कर चुका है. आप में से सब लोग अमेरिका जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं. तो आपको लगता है कि इस, अगर रॉबर्ट एफ कैनेडी कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स हो, तो उसका इम्पैक्ट होगा, भारत में भी होगा और यहाँ के पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी दबाव बनेगा? आई एम सॉरी, डॉक्टर कुशवाहा का लिंक आज पता नहीं क्यों फेल हो रहा है. तो if you can off your video, then I think that you will get the proper connectivity, so that at least we can hear your voice. Can you hear me now? No, it's okay. What I found that your connectivity is little disturbing, so we can hear your voice. Yeah. In fact, you can pass on one question to Dr. Peter McCullough, that which I forgot to ask actually, and by that time he is about to go. ये जो हमारा चेंज किया है, उस क्लॉज का मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है. दैट इज EUA, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन. ये नई चीज है. Yes. Struck It down. would have been nice. Yes. Must be scrapped because of all the mishappenings which happened during the pandemic, because there is nothing called emergency was created. If you have this EUA clause, emergency use authorization, they will create emergency and then use it again. So this EUA thing must go. That's what is my question to Peter. You can pass it on, and he may like. Yes, surely. बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार. अच्छा, क्या इसकी जानकारी है? क्या भारत में भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का है कोई क्लॉज तैयार किया है? जी, बिल्कुल है. ये आने की जरूरत है कि हमारे ये कब हुआ? ये इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन का जो क्लॉज है, ये कब आया? ड्यूरिंग पेंडेमिक आया या उसके पहले? पेंडेमिक शुरू हुआ, एपिडेमिक डिजीज एक्ट उन्होंने ओके. तो हम लोगों के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कंधे पर, खासतौर से यूएचओ के लिए, कि यूएचओ इस क्लॉज को हटाए कि इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन जो था, इट वाज इन फैक्ट मेंट फॉर ओनली फार्मा प्रेमिसेस टू गिव द बेनिफिट टू फार्मा कंपनी. और ये आप कभी भी कर देंगे, क्योंकि फिर आप अपने हिसाब से डोमेन एक्सपर्ट्स को लाएंगे. डॉक्टर बैनर्जी, आपको लगता है कि वो रेसिस्ट करेंगे? अभी वो पावर से भले ही चले गए हों, लेकिन वो रेसिस्ट करेंगे, अपने तई पूरी ताकत लगाएंगे रॉबर्ट एफ कैनेडी को भी बैकफुट पर ले जाने के लिए? बेशक करेंगे, और नए पैंडेमिक लाएंगे जो कि आम आदमी को डराने के लिए. अभी जैसे इमरजेंसी यूज, उन्होंने मंकी पॉक्स वैक्सीन का भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कर दिया है, पर्पस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का, तो जरूर करेंगे. और जब कोने को हम फंसाते हैं तो बिजली पूरे ताकत से लड़ती है. और अभी तो, और ऐसे पर एक चीज अच्छा है, जैसे प्रोफेसर भास्कर ने बोला, हमारा अमेरिका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है.
और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि आजकल हर कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, मिडिल क्लास वाले। जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं जल्दी से अमेरिकनाइज हो रहे हैं, तो ये अपने को अमेरिकन समझते हैं। जो वहाँ नहीं भी जाते हैं वो अमेरिका की तरफ देखते हैं, और तो वहाँ का अगर जागृत होंगे, वहाँ का डेमोक्रेसी जागृत होंगे, तो हमारा आम आदमी भी शायद जागृत हो जाए। पर्टिकुलरली अभी आपने देखा है कि पढ़े लिखे लोग को प्रॉब्लम ज्यादा था पैंडेमिक में, उन्होंने ये फैलाया। और जो स्लम वाले थे, जो गरीब थे, जिनकी रोजी रोटी चली गई, उनको जागृत पहले से ही थे। वो बिगर उनका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ट्रम्प के बराबर है, क्योंकि ट्रम्प भी ज्यादा पढ़ा जानकारी नहीं होकर भी कॉमन सेंस है। तो हमारे जो पढ़े लिखे वाले को ही प्रॉब्लम था, और पढ़े लिखे लोग अपना ऑफ द सेल्फ अमेरिका से गाइडेंस लेता है, बेशक अमेरिका ना जाए। तो हमको तो उम्मीद है ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास सुधर जाएगा तो पूरा देश सुधर जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर बैनर्जी। अब मैं इसीलिए भास्कर जी से एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूं। पूरे कोविड में जो पढ़े लिखे लोग थे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, मोस्टली फ्रॉम ऑल प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT and the medical institutions, and their families, their friends, their colleagues are living in US. आपने कहा बहुत स्ट्रांग रूट कनेक्शन है, लेकिन उस दौरान आपने भी बात की होगी, हमने भी बात की है, वो सभी लोग जो मेनस्ट्रीम नैरेटिव था उसी से गाइडेड हो रहे थे। लेकिन अमेरिका का रिजल्ट ये बताता है कि अमेरिकन ने, हमको नहीं लगता है कि इंडियंस की कितनी भूमिका रही इसमें, क्योंकि जो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी जो उनसे बात हुई, वो सब डेमोक्रेट के समर्थक थे। वो ट्रम्प को वुमेनाइजर तो पता नहीं क्या क्या कह करके उसको डिमोलिश करने की उन्होंने पूरी कोशिश की, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, और ये सारे पढ़े लोग हार्वर्ड में, प्रिंसटन में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हैं। तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है। इसलिए डॉक्टर बनर्जी जो कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुनौती होगी कि साइंटिफिकली आर्गुमेंट को प्लेस करें, उनके दिमाग में ये डालें कि क्या क्या गतिविधियां हुई कोविड के दौरान और कितना बड़ा अन्याय हुआ, और उसको जैसा आपने कहा कि बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, अदरवाइज वो कहेंगे कि ये तो एंटी साइंस है। तो वो पब्लिक डोमेन में इस डिस्कोर्स को फाइन ट्यून करके कि दे वेर नॉट अगेंस्ट साइंस, रादर दे वेर trying to give the second point of view, and they were not ready to get that point of view. So in fact they were pro science, जिनको इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला बताया। आपको लगता है कि ये चुनौती होगी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? Yes, I definitely think this change of mind is the most difficult. और पढ़े लिखे लोगों का मन में बदलाव लाना और भी मुश्किल है, लेकिन I have observed some minor changes, I will say, in my circles who are now in America and previously Democrat supporters, and they are finally seeing कि मीडिया जो बोलती है वो कई सारे झूठ बोलती है, और it's because of that Trump has won a second time. It's not because Americans who voted for Trump are against women or against people of color. It's not that, but it is for different reasons. They are slowly realizing. I'm hoping that this will continue. So thank you very much, Dr. Professor Bhaskaran Raman and Dr. Banerjee and Dr. Kushwaha. ये बहुत बड़ी चुनौती होगी भारतीय प्रशासन के लिए भी और अमेरिकी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि जिनको एक प्रकार से जो मुगली घुट्टी पिलाई गई थी कोविड के दौरान, कि जो कुछ भी वहां के फ्रंटलाइन मीडिया कह रही है वही सही है, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है वही सही है, जो एंथनी फॉची कह रहा है वही सही है। क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम आपने सुना होगा, एंथनी फॉची ने कहा आई एम द साइंस, और इसके लिए उनको बहुत क्वेश्चन किया गया था कांग्रेसनल हियरिंग में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो साइंटिफिक आर्गुमेंट अच्छा होगा, बेहतर होगा, रॉबर्ट एफ कैनेडी निश्चित रूप से वो स्पेस क्रिएट करेंगे जहां साइंटिफिक आर्गुमेंट को और शार्पन किया जाए, ना कि बैन किया जाए। लेकिन जो लोग कल्प्रिट हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने पैसे बनाए, जिनका बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, फार्मा प्रेमिसेस का, ब्यूरोक्रेट्स का, वहां के सीडो साइंटिस्ट का, सीडो साइंस जर्नल का, वो सब रेसिस्ट जरूर करेंगे।
वो सब फेक न्यूज जरूर फैलाएंगे, वो सब दोबारा कहेंगे कि ये सभी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एंटी साइंस हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी एंटी साइंस हैं, एलन मस्क एंटी साइंस हैं, ये सारी बातें होंगी। लेकिन आपको इस बार अपनी आंख, अपने कान, अपने दिमाग सबको खोल के रखना पड़ेगा और क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा बढ़ाइए, सोचिए, अपने कॉमन सेंस को भी थोड़ा अप्लाई कीजिए। तो शायद आने वाली जो भी महामारी होगी, जो क्रिएट किया जाएगा, अगर आएगी तो अगर ऐसा फैब्रिकेटेड रहता है तो जो 2030 एजेंडा का हिस्सा है, बार बार एपिडेमिक आप देखेंगे, बार बार पेंडेमिक देखेंगे, तो उसके प्रति आप सतर्क रहेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सतर्क करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशल ब्रॉडकास्ट के लिए। आशुतोष कन्नड़ दीजिए, नमस्कार।